है। एक है, एक मेटल बॉल के साथ यू यू हैव टू अरेंज इट एट द एज। ओके, तो सीस्मिक शॉक पे क्या होता है, द बॉल विल रोल इन टू दैट पर्टिकुलर लोकेशन एंड इट विल सील, मतलब एक सिमिलर टू अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ओके, तो एक सॉकेट रहना चाहिए। ओके, वहां पे दूसरे एंड में there should be a ball, when there's a seismic shock, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के साथ वो बॉल रोल होके वो जॉइंट पे जाके बैठ जाएगा, सो इट विल लॉक द गैस फ्लो। ओके, the other is to have like a digital meter or a flow sensitive device। ओके, अगर वो पर्टिकुलर फ्लो ऑफ गैस एक थ्रेशोल्ड से ऊपर चला जाता है तो ऑटोमेटिकली वाल्व क्लोज हो जाना चाहिए। ओके, तो वैसे बोथ ऑफ दिस कैन बी डन। द नेक्स्ट इज अ टनल रेट्रोफिट। टनल रेट्रोफिट में क्या होता है, जो पूरा स्लोप है, okay, जो पूरा एंटायर टनल जो है उसको वायर मेश के साथ आप कवर कर सकते हो, एंड देन यू हैव टू पिन इट डाउन टू द स्लोप विद मेटल रॉड्स। ओके, इसका कॉमन मॉडिफिकेशन, मतलब इट्स अ कॉमन मॉडिफिकेशन हाईवे कट्स wherever you have these appropriate conditions। ब्रिज रेट्रोफिट में एक्सपेंशन रॉकर्स आपने देखा होगा, दिस इज अ वेरी मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ समथिंग हैपनिंग। सो यूजुअली क्या होता है, शॉर्ट ब्रिजेस में एक एंड पे एंकर्ड होती है, दूसरे एंड पे रॉकर्स होती है। तो रॉकर्स जो है वो वर्टिकल और ट्रांसफर सपोर्ट देता है, मतलब जो परपेंडिकुलर सपोर्ट जो मिलना चाहिए जब भी टेम्परेचर ऊपर नीचे जाता है एक्सपैंडर कॉन्ट्रैक्शन के लिए, उसके लिए देता है। ओके, सो जो लेंथ ऑफ दिस दिस इज योर वर्टिकल चीजें जो है, फॉर लेंथ ऑफ द स्पैन जो हॉरिजॉन्टल में चेंज हो रहा है, दिस इज वेयर यू हैव एक्सपेंशन जॉइंट्स। आपने वॉल्स में भी देखा होगा, आपने कंक्रीट जहां पे भी है, you might have seen this on roads also, you have such gaps all when you're riding। ओके, ये जो गैप है वो कोम की तरह, मतलब एक एक्सपेंशन जॉइंट पूरा इट विल रन अलोंग द एंटायर लेंथ। उसमें जो भी टेम्परेचर की वजह से ऊपर नीचे जा रहे हैं या वाइडन होके कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ऑल ऑफ दैट गेट अकोमोडेटेड बिकॉज ऑफ दिस एक्सपेंशन जॉइंट्स। अगर एक्सपेंशन जॉइंट नहीं होती है तो ओवर टाइम क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली इट विल स्टार्ट लाइक this concrete on this side will interact here, this concrete will start exerting pressure here, और यहाँ पे cracks आने लग जाएंगे if you do not have these expansion joints। Okay, so the next is your deck rigidity। Okay, so suspension bridges उनका साइड टू साइड मोशन हो जाता है, राइट? तो कभी कभी वो बहुत ज्यादा हो जाता है। सो डिजाइन यूजुअली क्या होता है, सस्पेंशन ब्रिजेस में थोड़ा हिलने के लिए जगह देखते ही दे डिजाइन है, बट कभी कभी उससे ज्यादा जब हो जाता है वो रोड सरफेस को तोड़ देता है, फ्रैगमेंटेशन हो जाता है। सो उसमें बेयरिंग्स को इश्यू आ जाती है, प्लास्टिक डिफॉर्मेट हो जाता है, फिर कंपोनेंट्स ब्रेक हो जाते हैं, सब हो जाता है। सो इस जगह पे हाइड्रोलिक डैम्पर्स जो है, या तो स्लाइडिंग कनेक्शंस जो है, या तो डायगोनल रीइंफोर्समेंट्स जो है वो यूज करेंगे, सो दैट your kinetic energy is converted into heat in this particular one। Your clamped sliding connections will give you a horizontal passageway, जैसे हमने पहले देखा था। Okay, so now in these failure and solutions वाला section, we're looking at specific failures, we're looking at specific solutions for those failures जो हमने पहले देखा था। तो ये combination of जो भी हमने starting में देख रहे थे उस सब का combination आ जाएगा। So now if at all your question is something to do with, okay, your particular case में what would be a good solution? Okay, so in that particular case you should be able to point out कि हाँ, hydraulic dampers will help, या sliding connections will help, या diagonal reinforcements will help। Now you know three methods। हो सकता है deck rigidity के लिए एक और option देके which of these are not a methods पूछ सकते हैं, because this is the kind of question that you should be expecting from this section। फिर लैटिस गर्डर्स, बीम्स एंड टाइज जो भी है। ओके, सो लैटिस गर्डर्स में दो आई बीम्स होते हैं, उसमें एक क्रिस क्रॉस लैटिस भी होता है, फ्लैट स्ट्रैप की तरह या तो एंगल स्टॉक की तरह। ओके, सो व्हाट हैपेंस इज you can replace the open lattice with plate members and replace the hot rivets with bolts। That's your basic lattice girders, beams and ties का जो replacement है और strengthening है वो है। Now rivets क्या है? Rivets, okay. So traditional rivets में you can burn it out with an oxygen torch and replace with a locator bolt. Okay, so locator bolts are usually made of a high strength alloy and is heat treated. Okay, and so plastic shear failure typical of hot rivets, not the brittle fracture of ordinary bolts. ये दोनों नहीं होगा if you replace it with a locator bolt. So hot rivets are easily replaceable. It's not मतलब I don't know if you've seen a hot rivet. It would be मतलब
एक सेकेंड. You might have seen it in movies. So ऐसे ऐसे शेप में होता है. Okay. Hot rivets क्या होता है? You basically add heat to add these into से मतलब you see in railway tracks ना एक बड़ा सा you have like a semicircle joint मतलब it looks like a screw from the outside you'll be able to see only this semicircle का part है. Okay. तो यूजुअली उसको 50 to 70% हीट देके ही यू एड इट मतलब you, it will not be you'll not be able to screw it in just like a normal screw or something. You have to do additional heating. That's why they call hot rivets. ओके एंड जैसे ही वो कूल होता है वो क्या होता है वो थोड़ा श्रिंक करके वो क्लैंप पकड़ लेता है. सो नाउ the reason that we need to look at hot rivets is because during any hazard वो movement की वजह से heat भी होता है. So when you have heat automatically hot rivets start coming out of its own place. तो पूरा निकाल के लोकेटर बोल्ट से रिप्लेस करना is a good solution. तो I think we're तो done मैम with ये this. रेलवे इसमें यूज होता है क्या ज्यादातर? हाँ yes yes रेलवेज का यूज कोचेस होता है. में? Okay, I think we're done. One second. Huh, we are done. Okay, so